Good evening, everyone. Welcome to the session of The Hindu. In today's session, first topic that we are going to discuss is regarding this retrospective taxation that was repealed recently. So हम retrospective taxation का थोड़ा history भी check करेंगे, है ना, कि क्या history है. What is this Vodafone वाला dispute और what is this Kern वाला dispute जिसकी वजह से this issue came in news and eventually government को अभी ये retrospective taxation को हटाना पड़ा. Right? Good evening everyone. चलो, सो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ था, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. वंस यू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ था, फिर हम न्यूज देखेंगे क्या हुआ था क्या नहीं, तो इजी हो जाएगा समझने के लिए. गुड इवनिंग, हेलो हेलो हेलो, बहुत बढ़िया, ठीक है. सो तो केस ये था कि देयर वाज वन कंपनी, ठीक है. तो अब इंडिया ने, जैसे एक कंपनी है, सपोज कर लो कि हचिनसन, हच का कुत्ता देखा होगा, है ना, हचिनसन कंपनी है. सो दिस हचिनसन कंपनी वाज समवेयर रजिस्टर्ड इन से नीदरलैंड्स. ओके, नीदरलैंड्स में रजिस्टर्ड थी ये कंपनी. इन्होंने एक अपना दूसरा ऑफिस स्टार्ट किया, या फिर उन्होंने सपोज कर लो वोडाफोन को अपना शेयर बेच दिया, राइट. सो दिस हचिनसन इज नीदरलैंड्स बेस्ड कंपनी. दे हैव वन यूनिट इन इंडिया, जो हच इंडिया है, कंसिडर कर लो, ठीक है, हच इंडिया का था ये. नाउ दिस इंडिया बेस्ड कंपनी, दिस हचिनसन, outside this Netherlands based company was having share in Hutchinson India. They were having share in Hutchinson India. So suppose they were having 50% share, ठीक है, इनके 50% शेयर थे. Now they felt कि ये Hutchinson India जो है अब इसको बेचना पड़ेगा, ठीक है. They want to go out of India. They want to go out of India. Now they decided to have an agreement with Vodafone, which is UK based company. इन्होंने Vodafone के साथ agreement किया. Now सपोज इन्होंने जब इंडिया में इन्वेस्ट किया था तब इन्होंने 10,000 करोड़ इन्वेस्ट किए थे. सोचो कि इन्होंने 10,000 करोड़ इन्वेस्ट किए थे. आफ्टर दैट व्हेन दे डिसाइडेड टू सेल दिस टू वोडाफोन, इन्होंने इसको सपोज कर लो 15,000 करोड़ में सेल कर दिया. 15,000 करोड़ में इन्होंने इसको सेल कर दिया. नाउ दिस एग्रीमेंट इन्होंने किया नॉट इन इंडिया, ये इन्होंने कहीं पे बाहर किया. से एक आइलैंड है केमैन आइलैंड, यहाँ पे जाके इन्होंने एग्रीमेंट किया. Now, if you see this company, Hutchinson, जो नीदरलैंड्स बेस है, they have made profit out of this. 10,000 करोड़ में खरीदा था, 15,000 करोड़ में इन्होंने बेच दिया. 15,000 करोड़ में इन्होंने बेच दिया, तो they have made profit. लेकिन वोडाफोन का पैसा अब इंडिया में आ गया. वोडाफोन के कितने आ गए, अराउंड 15,000 करोड़ आ गए इंडिया में. तो नाउ इंडिया वाज सेइंग कि जो ये हचिनसन कंपनी है, इसको कैपिटल गेन टैक्स पे करना चाहिए. कैपिटल गेन टैक्स. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. दिस इज नॉट एग्जैक्ट स्टोरी. एग्जैक्ट स्टोरी क्या हुई थी वो मैं आपको आर्टिकल में समझाऊंगा, ठीक है. तो हमने इनको कहा कि यू शुड पे टैक्स. आपने जो कैपिटल गेन किया, पैसा गेन किया है, इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना चाहिए. यू हैव टू पे टैक्स. बट दे डिड नॉट पे दिस टैक्स. बिकॉज देयर वाज वन एग्रीमेंट कॉल्ड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एग्रीमेंट, BETA, or you can say bilateral investment treaty agreement was there. Now what this BETA says, BETA was signed between say India and UK या फिर इंडिया एंड नीदरलैंड्स, ठीक है. इनके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया है. तो दिस एग्रीमेंट सेज दैट कि आप इंडिया में अगर ऐसे आप कुछ इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्सेशन वगैरह में कुछ छूट दी जाएगी. दिस BETA इज टू प्रमोट आउटसाइड इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया. ये बाहर की इन्वेस्टमेंट इंडिया में प्रमोट करने के लिए है. दिस इज देयर टू प्रमोट आउटसाइड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. Now we said कि you have gained capital, you can say out of this जो भी आपने ट्रेड किया है, out of this आपने यहाँ पे पैसा ज्यादा कमाया है, तो you have to pay tax. तो इन्होंने टैक्स पे करने से मना कर दिया. इन्होंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन से दिस लोकेशन जहां पे ये डील हुई है, ये लोकेशन के हिसाब से अगर बीटा की बात की जाए तो शेयर ट्रांसफर किए गए. बीटा कहता है कि कहीं बाहर अगर ट्रीटी हुआ है, कहीं बाहर अगर एग्रीमेंट हुआ है, तो आप उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते, ऐसा इन्होंने बोल दिया. इंडिया ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. सो दिस वोडाफोन या हचिनसन, जिनके ऊपर भी फिर ये केस किया गया, दे विजिटेड इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में ये गए. इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में ऑफकोर्स इनकम टैक्स ने इनके ऊपर केस लगाया था, तो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में ये केस हार गए. आफ्टर दैट दे डिसाइडेड टू गो इन से दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है. दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने सिमिलरली केस फाइल किया कि आप ऐसे टैक्स नहीं लगा सकते हमारे ऊपर. दिल्ली हाई कोर्ट सेड यस, ठीक है, करेक्ट बात है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर पहले ये नहीं था,
ऐसा टैक्स आपके, अगर इंडिया के बाहर कोई ट्रीटी होती है, अगर इंडिया के बाहर कोई ट्रीटी होती है उस पर अगर टैक्स नहीं लगाया जा सकता तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा. देयर इज नो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑन यू, तो यू विल नॉट बी टैक्स. तो दिल्ली हाई कोर्ट गेव जजमेंट इन फेवर ऑफ से वोडाफोन. इन्होंने दे दिया वोडाफोन के फेवर में जजमेंट कि आपको कोई टैक्स वैक्स नहीं पे करना है. आफ्टर दिस, बिकॉज देयर वाज नो प्रोविजन टू दिस, देयर वाज नो प्रोविजन टू दिस. नेक्स्ट 2012 के आसपास की बात हुई थी, 2012 के आसपास. आफ्टर दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड वन टैक्सेशन क्लॉज रेट्रोस्पेक्टिवली. रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि एक ऐसा हमने अमेंडमेंट कर दिया, दैट अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल फ्रॉम द प्रीवियस डेट. हमने बोला कि नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिविल केसेस में रेट्रोस्पेक्टिव और सिविल इश्यूज में रेट्रोस्पेक्टिवली भी लॉ लगा सकती है. तो हमने बोल दिया चाहे एग्रीमेंट इंडिया में हो चाहे एग्रीमेंट बाहर हो, सिंस 1962 ऑनवर्ड्स अगर इस तरह से कोई भी ट्रेडिंग हुई है ऑफ द शेयर्स या ट्रांसफर ऑफ शेयर हुआ है 1962 ऑनवर्ड्स, तो उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा आपको, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. दिस वाज पास्ड इन 2012 बट इट वाज एप्लीकेबल सिंस 1962. तो 1962 से आज तक जितने भी ऐसे ट्रांजैक्शन हुए उन सबको टैक्स पे करना पड़ेगा, उन सबको टैक्स पे करना पड़ेगा. उसमें कुछ बड़े बड़े केसेस आए. इससे पहले जो कर्न का केस है, दैट ये केस तो अलग चल रहा था. कर्न का केस इस तक अभी तक न्यूज में नहीं था क्योंकि सरकार को ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है. वोडाफोन से दिस इशू केम इन हाईलाइट, वोडाफोन से इशू हाईलाइट में आया, बट कर्न का भी फिर उसके बाद इशू बाहर निकल के आया. उन्होंने 2006-2007 के आसपास किया था. सिमिलर ट्रांजैक्शन वाज देयर. कर्न एंड वेदांता ग्रुप वाज देयर. वेदांता यूके बेस्ड अगेन एंड कर्न आल्सो यूके बेस्ड. उनका ट्रांजैक्शन हुआ था, दैट वाज आल्सो आउटसाइड इंडिया. वो भी केस बाहर निकल के आया तो हमने सबसे पैसा लेने का डिसाइड किया. नाउ व्हेन वी डिसाइडेड टू टेक मनी फ्रॉम ऑल दिस, हमने इन सबसे पैसा लेने का डिसाइड किया था, तब इन्होंने, क्योंकि इंडिया का तो अब ऐसा हो गया, इसके बाद अगर हाई कोर्ट में भी जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, उन्होंने भी जजमेंट दे दिया इंडिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से. बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट हैव ऑल द राइट्स, इंडियन गवर्नमेंट हैव ऑल द राइट्स टू अप्लाई द लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली. हमारे सरकार के पास पूरा हक है कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली कोई भी लॉ लगा सकते हैं सिविल केसेस में, नॉट इन क्रिमिनल केसेस बट सिविल केसेस में. रेट्रोस्पेक्टिव मींस पुराने टाइम से लग जाना, ठीक है. क्रिमिनल केसेस में वी कांट. सपोज करो कि आज के 50 साल पहले इंडिया में कोई चीज क्राइम नहीं थी, लाइक चोरी करना अगर क्राइम नहीं था, एग्जांपल दे रहा हूं, चोरी करना अगर क्राइम नहीं था और तब अगर आपने चोरी की है, आज की डेट में अगर चोरी क्राइम हो चुका है तो आपको रेट्रोस्पेक्टिवली लॉ नहीं लगाया जा सकता. आपको रेट्रोस्पेक्टिवली आपने जो पुराने जमाने में चोरी की है उसके लिए फाइन नहीं लगाया जा सकता या फिर उसके लिए सजा नहीं दी जा सकती. बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ सिविल केसेस. सिविल में ऐसा नहीं है. सिविल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन यूज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन या रेट्रोस्पेक्टिव लॉ. तो इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव लॉ लगा दिया. नाउ व्हेन वी अप्लाइड दिस रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, 1962 से अभी तक के केसेस बाहर निकल के आए. नाउ बिग कंपनीज लाइक कर्न या फिर वोडाफोन है, इन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया के सिस्टम में तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, इंडिया के सिस्टम में तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला. तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम बाहर जाते हैं, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाते हैं, PCA विच इज लोकेटेड इन द हेग, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के ऊपर टेक केयर करता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के ऊपर. एंड द प्रॉब्लम इज दिस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एग्रीमेंट जो बीटा साइन किया गया है, बीटा कहता है अंडर बीटा वी हैव गिवन इम्यूनिटी फ्रॉम द रेट्रोस्पेक्टिव लॉ काइंड ऑफ. तो जब ये बीटा साइन किया गया था, बीटा के अंदर बोला गया था कि इंडिया कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं लगाएगा. बिकॉज बाय अप्लाइंग दिस रेट्रोस्पेक्टिव लॉ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिस्करेजिंग द इन्वेस्टर टू कम इन इंडिया. वी आर डिस्करेजिंग द इन्वेस्टर टू कम इन इंडिया because there was signing of beta which promoted trade and investment between India and UK और India and Netherlands. इनके अंदर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया. दैट्स व्हाई दीज कंपनीज केम टू इंडिया फॉर इन्वेस्टमेंट. बट नाउ आफ्टर अप्लाइंग बीटा वी आर सेइंग, आफ्टर अप्लाइंग दिस रेट्रोस्पेक्टिव लॉ वी आर वायलेटिंग बीटा, बिकॉज बीटा सेज दैट यू विल नॉट टैक्स अस रेट्रोस्पेक्टिवली. बीटा कहता है कि अगर कोई कंट्री, आपके कंट्री में आपने साइन कर लिया है बीटा उस कंट्री के साथ, तो आप उसके ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन नहीं लगा सकते. तो दिए गए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द हेग नीदरलैंड्स में, और वहां पे बोला कि बीटा के अंदर देखो ऐसे मना किया गया था, बीटा के अंदर ऐसा मना किया गया था कि आपको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लगाया जाएगा एंड ऑल. परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन गेव वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ वोडाफोन अर्लियर एंड देन इन फेवर ऑफ कर्न. दोनों के फेवर में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने केस कर दिया, वर्डिक्ट दे दिया. एंड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आस्क्ड इंडिया, they asked India to give
डैमेज का जो भी डैमेज या फिर जो भी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वोडाफोन और कर्न से लिया है उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और उसका डैमेजेस भी पे करने पड़ेंगे। जितना नुकसान वोडाफोन और कर्न का हुआ है उनको पैसा देने के लिए बोल दिया गया, इनको पैसा देने के लिए बोल दिया गया। आफ्टर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, हम परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को नहीं मानते, हम इनके वर्डिक्ट को नहीं मानते। बट इवेंचुअली स्लोली ये होने लगा था कि इट वाज अफेक्टिंग इंडियाज इन्वेस्टमेंट सिनारियो, इंडिया के इन्वेस्टमेंट को हैम्पर करने लगा था। आउटसाइड कंट्रीज वे आर नॉट कमिंग टू इंडिया एंड इवन आफ्टर दिस ये हुआ कि वी डिसाइडेड टू हैव 1-to-1 टॉक विद से कर्न वालों के साथ हमारा 1-to-1 टॉक हो रहा था। आफ्टर दैट कर्न ने क्या किया, यहां तक चीजें क्लियर है, इसको इरेज कर दूं, से यस और नो। व्हेन वाज बीटा साइंड? 1995 में बीटा साइन किया गया था, ठीक है सर। कैपिटल गेन टैक्स इंडिया ने वोडाफोन से, वो उनकी सब्सिडियरी थी क्योंकि हचिंसन का ही सब्सिडियरी था, वोडाफोन ऐसे अलग से एग्जिस्टेंस नहीं था, वो उसी के अंदर का था, उसी के अंदर का पार्ट था वो, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हुआ, अब यहां पे दिस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने वर्डिक्ट दे दिया, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने, पीसीए ने वर्डिक्ट दे दिया इन फेवर ऑफ, क्या हो गया, पीसीए ने, पीसीए ने सपोज वर्डिक्ट दे दिया, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने वर्डिक्ट दे दिया इन फेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर वोडाफोन और कर्न। और वोडाफोन और कर्न, अब कर्न ने क्या बोल दिया, इस कंपनी का कि इंडिया शुड पे अस डैमेजेस, इंडिया शुड पे अस इंटरेस्ट और हमारा पैसा वापस दो, हमने जो आपको टैक्स में पैसा दिया, क्योंकि इन कंपनीज ने कुछ पैसा टैक्स का अमाउंट हमको दे दिया था, तो हमने बोला कि ये सब पैसा वापस दो। इंडिया ने कहा हम इसको नहीं मानते, कर्न ने कहा कि मैं हायर अथॉरिटी में जाऊंगा, या फिर इंडिया ने भी कहा कि हम सिंगापुर में जाएंगे, जैसे कि ये हेग में लोकेटेड है, तो हेग का एपेलेट ट्राइब्यूनल भी है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का एपेलेट ट्राइब्यूनल भी है, दैट इज इन सिंगापुर, तो हम अपील करने यहाँ पे चले जाएंगे, ऐसा हमने सोचा। बट देन वी डिसाइडेड टू हैव 1-to-1 इंटरेक्शन विद कर्न। तो हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह है, ये सॉरी सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे, ये जाके इनके साथ डील किए, बात किए, कोशिश किए कि इस इशू को बायलैटरली रिजॉल्व कर लिया जाए। इन्होंने, कर्न ने इंडिया के साथ बात भी की, लेकिन रिसेंटली कर्न ने क्या किया, कर्न ने बोला कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वी शुड गेट आवर मनी, हमें ये डैमेजेस वगैरह पे मिल जाने चाहिए, एंड इफ इंडिया डज नॉट गिव अस वी विल ट्राई start sealing, we should start sealing the assets, foreign assets, हमें इंडिया के जितने भी फॉरेन एसेट्स है बाकी कंट्रीज में, उसको सील करके हमारा पैसा निकाला जाए। दिस वाज अराउंड 1.2 बिलियन डॉलर्स के आसपास था, 8,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट है कुछ, ठीक है। तो इंडिया के बाहर के एसेट्स को सीज किया जाए, जैसे कि इंडिया के एयर इंडिया मेनली इन्होंने टारगेट किया था, एयर इंडिया के ऑफिस है, इनसे यूके, यूएसए, फ्रांस, यहाँ पे जो एयर इंडिया के ऑफिसेस है उन सबको टारगेट किया जाए। इंडिया की जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उनके अगर फॉरेन कंट्रीज में कहीं पे इस्टेब्लिशमेंट है उसको टारगेट किया जाए। इंडिया की पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, एसबीआई वगैरह है, इनका पैसा अगर कहीं पे बाहर रखा हुआ है उस पैसे को टारगेट किया जाए, वहां से हमारा पैसा निकाल के दो। एंड इंडिया इज हैविंग अराउंड कुछ 60 to 80 बिलियन के बीच में हमारी बाहर इन्वेस्टमेंट है, 60 to 80 बिलियन, इनको चाहिए बस 1.2 बिलियन डॉलर, लेकिन इसके लिए ये थोड़ा है ना इज्जत का पूरा वाट लग रहा था। तो बिकॉज ऑफ दिस रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, इंटरनेशनली अपार्ट फ्रॉम दिस, इंटरनेशनली इमेज भी खराब हो रही थी, अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरनेशनली हमारा इमेज भी खराब हो रहा था, कंट्री वेयर नॉट बिलीविंग अस, उनका इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना कम हो गया। सबको wherever there are retrospective laws of taxation, generally they are there in many countries, but if there is retrospective taxation का हिस्ट्री होता है, जैसे इंडिया का है वैसे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का किसी कंट्री का हिस्ट्री होता है, इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस, इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस। तो इस इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस नहीं होनी चाहिए, इज्जत भी बची रहनी चाहिए, एयर इंडिया या फिर कोई और चीज है या हमारी कोई और बाहर की इस्टेब्लिशमेंट है उसको कॉन्फिस्केट नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों की वजह से इंडिया ने कहा कि एक काम करते हैं, फिर रिसेंटली वी हैव स्क्वैश्ड दिस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का सिस्टम। हमने जो 2012 में अमेंडमेंट किया था, टू द फाइनेंस बिल, हमने बोला कि दिस विल बी अप्लाइड यू कैन से प्रोस्पेक्टिवली। इसके बाद
after May 2012 if there is any international transfer that is happening of shares and all, उसके ऊपर हम टैक्स लगा देंगे. इससे पहले जो हुए हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा. और इन कंट्रीज को बोला गया, सॉरी इन कंपनीज को बोला गया कि आपने जितना भी पैसा वैसा पे किया है, टैक्स वगैरह दिया है, वो हम आपको वापस कर देंगे. लेकिन इन रिटर्न जो है आपको ये केसेस सारे इंटरनेशनली इंडिया के ऊपर से हटाने पड़ेंगे. आपको इंटरनेशनली केसेस हटाने पड़ेंगे. सो दिस मूव ऑफ रिपीलिंग दिस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन वाज एक्सेप्टेड, या फिर इसको टैक्स की जो एक्सपर्ट्स है उन्होंने कहा कि काफी अच्छा मूव है. लेकिन अब देखते हैं होता क्या है इन सब चीजों की वजह से. चीजें क्लियर है कि हुआ क्या? ठीक है. राइट सर. हचिंसन वोडाफोन का केस है ना, हचिंसन का भी है, वोडाफोन का भी है. एंड यस अच्छा. और ओके ओके सॉरी ओके डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस. एक काम करना, आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस इन इंग्लिश एज वेल बिकॉज आज मैंने शायद थोड़ा हिंदी में ही ज्यादा बोल दिया है ना. कोई बात नहीं. जनरली वी वोंट यूज इट, बट टुडे आई unintentionally used it anyways. Clear? Now while explaining Arul, you will understand. While we'll go in the PPT na, I'll use only so that you can understand this. There was not much to note on in this topic. Yes, this issue was majorly understand करने के लिए था Vaibhav. It was more for understanding because you must have been reading these articles in the newspapers regarding this issue, because this tax law is coming in news again and again. So if you are going through the article, it will be difficult for you to understand the article. That's why I thought to take up this topic, because there is no as such to note down or take up in this topic, but you should know what was the issue, right? Why should they pay if the tax transaction is not in India? Because they are gaining the money out of Agrim, because they are gaining profit because of India only, na. Their existence is there in India, or their effect is there. Whatever transaction that happened, that is having impact in India. Let's try to understand by this PPT. आपको idea लग जाएगा. So background, the Vodafone dispute, the transaction in 2007. Now these are actual names. अभी तक I have just used names to give you an overview or to understand the issue. Now these are the original names. Hutchinson Telecommunication International Limited, that is HTIL. It is Hong Kong based entity, sold its stake in Hutchinson Isar Limited, an Indian company. So there is Hutchinson India, Hutchinson Isar. So this Hutchinson Isar company thi. In this there was stakes of this Hong Kong based company. It was also Hutchinson only, to Vodafone International Holding BV, Netherlands based company, for $11.1 billion. So इन्होंने they have sold this to Voda, right? So they have sold this to Voda, but eventually what happened? Vodafone got stake in India, right? Vodafone got stake in Hutchinson Indian company, Hutchinson Isar Limited. They got stake in Hutchinson Isar Limited, and this affected this Indian system. This affected Indian system, and by this Hong Kong based company, that is Hutchinson Telecommunication International Limited, made a profit, right? So HTIL earned capital gain on the sale. HTIL earned capital gain, right? They have to pay capital gain tax because they have made capital out of India. The Indian revenue authorities considered that the acquisition stake in HEL by VIBHV, that is Vodafone, was liable for tax deduction TDS at source under section 195 of the Income Tax Act in 1961. Since Vodafone failed to withhold the Indian taxes on payments made the selling Hutch entity, as demands raised, Vodafone under section 202 subclause 1 subclause 1A 220 for non-deduction of the taxes. So this TDS, that deduction at source, did not happen. The Indian Supreme Court decision came in 2012. Indian Supreme Court's decision in this issue came in 2012, where the Supreme Court of India discharged. They have kept Vodafone free of the tax liability imposed on it by the Income Tax Department of the plaintiff, that is India. The Supreme Court held that the sale of the share in question to Vodafone did not amount to transfer of capital asset within the meaning of section 2 subclause 14 of the Income Tax Act.
The apex court not only quashed the demand for 120 billion international rupees by the way of capital gain tax, but also directed government to refund 25 billion uh, deposited by Vodafone in terms of interim dated November 26, 2010, along with the interest of 4% per annum within 2 months. The government was asked to give this money back by the Supreme Court of India. But then what government of India did? Government of India introduced a retrospective law to tax this. So the Indian retrospective legislation post above the judgment came. There was passing up of Finance Act of 2012 by Indian Parliament, which provided inter alia explanation of Section 1 subclause Section 1 Civil Appeal of the Income Tax Act 2012 amendment. This clarified an asset or a capital asset being any a share or interest of the company or entity registered or incorporated outside India shall always be deemed to have been situated in India if the share or the interest derives. Now this is important line. If the share का जो trade हुआ है या फिर जो भी whatever trade that happened directly or indirectly, its value substantially from the asset located in India. So this asset was located in India only, right? This asset was located in India only. So that's why there was inclusion of India. 2012 amendment said the term transfer includes or shall deem to always include disposing the parting which are not that important, just last line is important, dependent upon the flowing from the transfer of share or shares of a company registered or incorporated even outside India. So they included the companies which are even incorporated outside India to take up this retrospective taxation. Then arbitration claim under the India-Netherlands BIT. Now this is bilateral investment treaty which was signed in the year 1995 and came into effect in 1996. Aggrieved by the imposition of tax by the way of retrospective amendment by Indian tax legislation. This was violation of BIT. This was violation of bilateral investment treaty. And if there is any treaty, now whenever, see, India can say ki we are sovereign entity and we do not respect this bilateral investment treaty. But if we sign this bilateral investment treaty, at that time only, we give up our sovereignty. We say that if we are opting to bilateral investment treaty, if there is any international arbitration of this treaty under PCA, India will not say, because we of course can say we are sovereign country and we want money from this company, we will not give money. Kya kar lega? What PCA will do? But when we opt for this kind of BIT or agreement under which we give up our sovereignty regarding the disputes, if we say that if there is any dispute which arises out of this BIT, we will accept the decision of PCA, we will accept the decision of Permanent Court of Arbitration. We are giving up our sovereignty to decide what we want to do. We will of course do what Permanent Court of Arbitration is saying. Okay. So this is the situation in BIT. Now this is everything regarding business or investment. If you do not respect PCA, automatically other countries will start going out of India. Okay. So aggrieved by the imposition of tax by the way of retrospective amendment by the Indian tax legislation, Vodafone invoked arbitration under the India-Netherlands bilateral investment treaty through a notice of a dispute in 2012. In 2014, India stated that the dispute relating to wholly or mainly to the taxation are excluded from the scope of India-Netherlands bilateral investment treaty. In 2014, Vodafone issued a notice of arbitration to India as required under the India-Netherlands bilateral investment treaty. इन्होंने इंडिया को नोटिस दे दिया. Vodafone award in 2020, it came in 2020. International Arbitral Tribunal comprising of these people gave award in favor of Vodafone, reportedly for violation of fair and equitable treatment. This is important treatment. This is important statement. It says that this is violation of fair and equitable treatment standard under the BIT. The arbitral tribunal directed India to reimburse legal cost approximately around 850 million rupees to Vodafone. तो यहाँ पे हमें पहली बेइज्जती हो गई है ना, ये हमको 850 मिलियन देने की बात कर दी. Then second is this Kern energy dispute. Now Kern is a global oil and gas exploration company. ये oil and natural gas related company है. And about a decade ago, they decided to restructure their Indian operation. The exact details of the transaction are rather complicated. Kern Energy, a company based in Scotland,
ठीक है, so remember this company is based in Scotland, held all its assets including some of the India's richest oil fields through web of Indian entities. So they are having lot of Indian based entities, Kern Energy की Indian based entities, तो इनके through they are having multiple, you can say, oil fields in India, mainly in Rajasthan. Kern Holdings, Kern UK Holdings Limited, a holding company incorporated in UK in 2006. Kern India Holdings Limited, CIHL, Kern UK Holding, Kern India Holding, was incorporated in Jersey. Now this company is for India Holdings. That means whatever stakes or whatever deposit they are having in India, this company to hold India's assets was incorporated in New Jersey, that is America, in August 2006. Wholly owned subsidiary of Kern UK. Under the share exchange agreement between Kern UK and Kern India, Kern UK transferred a share constituting entire issued share capital of 9 subsidiaries of Kern Group held directly or indirectly by Kern UK to Kern India. तो इन्होंने क्या किया? Whatever 9 subsidiaries they were having, Kern UK having in India, they transferred all the shares into Kern India, that is located in Jersey, that were engaged in oil and natural gas sector in India. In 2006, Kern India Limited was incorporated in India as a wholly owned subsidiary of Kern UK. In 2006, Kern UK sold its share of Kern India to CIL, an internal group restructuring the transaction. तो इन्होंने CIHL से CIL में डाल दिया, that is again Kern India Limited. The consideration was partly in cash and partly in the form of shares of CIL. CIL divested 30.5% of the shareholding by the way of an initial IPO. So what now this CIL done? CIL became public company. CIL became public company. IPO launch करना मतलब क्या होना? Now what they have done now, simply understand. There was CUHL, okay, UK based company. That company was having one holding called CIHL in India. 100% share is of CIL, 100% share is of CIL. Now CIL is feeling that they have to take some money out of India. They issued IPO. That means they issued that if public want to get the share of CIL, public can get of around 30.5%. Suppose karo 30%. That means they said 300 crore. If public want, public can take the share of 30% of CIL, and whatever 1000 crore they were having, out of this public got 300 crore, and CIL shifted the profit of 300 crore to their own country. They have shifted their profit to their own country. So as a result of divesting approx 30% of its stake in subsidiaries and part of IPO procedure, this Kern UK received approx around 6,101 crore rupees, approx $931 million. In December 2012, UK-based Vedanta Resource PLC, that is Vedanta Group of UK, Vedanta of UK, acquired 60% stakes in CIL. Almost 60% stakes they have acquired in CIL. Now, what happened? Vedanta, UK-based, CIL, India-based, but the transaction did not happen in India. Transaction happened somewhere else on some another island country. In April 2017, CIL merged with Vedanta Limited, a subsidiary of Vedanta UK. A subsidiary of Vedanta UK. So in all this transaction, what happened? Kern got a lot of profit. They got a lot of capital gain, but the transactions were not happening in India. So under the terms of the merger, Kern Energy, a subsidiary of Vedanta Resources, received ordinary shares and preference shares of Vedanta Limited. As a result, Kern Energy had a shareholding of approximately 5% in this Vedanta, along with the interest preference share. No need to go in details of this, what exactly are these shares. In 2017, this investment was valued at around $1.1 billion. $1.1 billion का investment हो गया ये. Transfer was quite opaque and involvement of multiple intermediaries, बहुत सारी subsidiaries थी, बहुत सारी अलग अलग companies का involvement आ गया. And while Kern only transferred the assets between companies it's fully owned at that time, there was some confusion regarding the assets' true value. The authorities believed that the company's actual investment acquiring these assets is scaled up to around
about 2000 crores, 2000 करोड़ का कुछ इसमें इनको इश्यू लग रहा था. By 2007 Kern India had gone public and raised around 5000 crore. इन्होंने 5000 करोड़ और पब्लिक से रेज कर लिए आईपीओ में. They were worth lot more than 2000 crore now. The Kern UK had made capital gains amounting of up to around कितना प्रॉफिट किया इन्होंने 26,000 crores. This is the amount of profit that they have made without paying any capital gain tax to India. Without paying any capital gain tax to India, they are just using a loophole in the system. They were just using a loophole in the system. उन्होंने system का loophole का use किया. And if the transfer involves monetary gains, then the taxman will ask for his share, right? Unfortunately, tax authorities did not make this demand in 2006. Not even in 2007. 2006-2007 कभी भी डिमांड नहीं किया. डिमांड कब किया गया? बहुत सालों के बाद. The decision largely involved in one subject. Was this a deliberate case of tax avoidance? They tried to avoid the tax, or was it a simply prudent tax planning? क्या ये अच्छा टैक्स प्लानिंग था कि आपको टैक्स ना भरना पड़े, या फिर इन्होंने टैक्स अवॉइड करने के लिए इन सब चीजों का यूज किया? ठीक है. So after all, if Vodafone had designed the transaction in deliberate ploy to avoid taxes, they could be held liable. And if they could prove they have simply executed the transaction without any ill contention, maybe they will get some reprieve. After a lengthy deliberation, Supreme Court of India gave transfer did not amount to any tax avoidance, and Vodafone no longer had to pay any money to the taxman. तो ये verdict आ गया Vodafone के side. But then the government did something extraordinary. They came up with the new tax law bill with retrospective legislation. 1962 से लेके आज तक जितने भी ऐसे ट्रांजैक्शन हुए सबके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. And that's where Kern also comes in, because इनके ट्रांजैक्शन भी इससे पुराने थे. यहां तक चीजें क्लियर है? I believe we have done current dispute someday. Yes, Suhani, it was done, I think 24th of May. ठीक है, 24th of May को हुआ था. No need to make topic के notes, but just go through this क्योंकि न्यूज़पेपर में आया होगा. And many people in chat box only last to last session they were saying कि ये समझ नहीं आ रहा है. ठीक है. Difference between tax avoidance and prudent tax planning. Tax avoidance means you are finding a loophole in the system to not pay the tax. You are using, or you can say misusing, that loophole. And prudent planning means you have planned tax appropriately so that you don't have to pay any extra taxes. Prudent is, you can say, you are not finding out loophole, you are just following what system says. And avoidance, that means you are finding a loophole to not pay the tax. And last, third term related to this is tax evasion. That is tax evade करना. That is illegal way of not paying the tax. That is tax evasion होता है. ठीक है. Now this way Kern also came in. तो Kern में भी यही कहानी चल रही थी. Tax authorities realized they could get Kern to pay since the new tax code will be applicable to the 2006 transfers as well, and the Kern have already sold its asset to Vedanta by this time. Now Kern Energy ये भी आगे 10% of the Kern India or whatever this issue आपको समझ आ गया होगा. अब इसके डिटेल्स में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है कि क्या इशू था. ठीक है. They are having oil blocks in Rajasthan, mainly Rajasthan RJ01, whatever these blocks are there in the Badmer district. Remember the district? They are having oil blocks in the Badmer district of Rajasthan. The block around $15.1 billion का ये block है, and main three areas are there: Mangala, Bhagyam, and Aishwarya. Mangala, Bhagyam, and Aishwarya. These are the oil blocks or oil fields that they are having here. ठीक है. तो ये लास्ट 2 डिकेड से ऑनशोर हाइड्रोकार्बन और यू कैन से डिस्कवरी ऑफ ऐश्वर्या एंड भाग्यम वाज आल्सो देयर. तो ये इनके कुछ ऑयल फील्ड्स है इन राजस्थान. Kern also believed that they were entitled to tax refund, but the tax authorities refused. India UK bilateral investment treaty, we are having similar treaty with UK as well. तो इसमें भी arbitration हुआ 1994-1995 में ये अप्लाई हुई थी. The Permanent Court of Arbitration at Hague said the amendment of tax code amounted to a gross violation of fair and equitable treatment promised under the bilateral investment treaty. So this is not fair and equitable, you can say, treatment that we have given to them. And the court agreed that this was a fact, a gross violation. This was a gross violation. PCA also said
the issue was not just related to tax but was an investment related dispute. So therefore, under the jurisdiction of International Arbitration Court, this comes. India must not make any more attempt to recover the alleged tax liability or any of the interest or penalties arising of the alleged liability through any other means. Then they have now asked the Indian government to fully compensate Kern for selling the asset and not awarding them refund. और ये बोला गया अराउंड $1.2 billion प्लस इंटरेस्ट एंड वॉट एवर कॉस्ट एंड डैमेज दैट हैपन टू कर्न, ये पूरा की पूरा इंडिया को पे करना होगा, ये पूरा की पूरा इंडिया को पे करना होगा, ठीक है. एंड आफ्टर दिस, the problem with this international ruling is enforcement. India has always contested that the tax demand cannot be adjudicated by the foreign court. That is, if the legislator decide to pass a law, then foreign entity should not be there. But Kern ने threaten किया इंडिया को by seizing the government owned assets abroad are not compensation in full. अगर इनको compensation नहीं मिला तो ये क्या करेंगे, foreign asset इंडिया के बेच देंगे. Kern has reportedly initiated a proceeding in the courts, mainly confiscating assets of India in USA, UK, Netherlands, Canada, Singapore, to enforce the award against India. To enforce the award against India, इनके पैसे निकल जाए. Earlier this month, it filed a plea in the court of New York because that company was registered in New Jersey. तो उन्होंने न्यूयॉर्क में केस कर दिया, declaring Air India as India's alter ego, so it can be forced to pay the award. Even if Kern succeeded in getting Air India recognized as the alter ego of the government, it would not be mean that airline's asset will fall into the hands of British firm. All it means that the Kern can seek a seizure of Air India may have in USA. Okay, तो ये ऐसी चीजें होने वाली थी, फ्यूचर में होने भी लगी. The only threat they can give is when the Air India airplane lands in US airport, Kern would be able to move to court to get attach it before it flies out. तो इसको अटैच करके उनकी प्रॉपर्टी में डाल दिया जाए, so that compensation should be given to Kern. Okay. No proceedings have been initiated. ठीक है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है इसमें. Now why it came in news, सीधा उस पे आते हैं. अभी गवर्नमेंट स्टैंड, गवर्नमेंट ने बोला था कि चैलेंज द आर्बिट्रेशन अवार्ड. दे सेड दिट इज विग्रसली डिफेंडिंग. ठीक है, इंडिया नेवर एग्रीड टू आर्बिट्रेट द नेशनल टैक्स डिस्प्यूट. इंडिया ने कभी ऐसा एग्री नहीं किया था, लेकिन वही था कि इवेंचुअली बेइज्जती हो रही थी. परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जिसको सारी दुनिया रिस्पेक्ट करती है, एक्सेप्ट करती है, तो वो उसके हम अगेंस्ट जा रहे थे. जब पीसीए ने इंडिया के फेवर में वर्डिक्ट दिया था ड्यूरिंग दिस इंडस वाटर ट्रीटी एंड ऑल, वी रिस्पेक्टेड पीसीए, वी हेल्ड पीसीए, वी सेड किया ये सबसे अच्छा है, ये बेस्ट है, इसका सबको मानना चाहिए. एंड नाउ व्हेन पीसीए इज गिविंग वर्डिक्ट अगेंस्ट इंडिया, वी आर सेइंग कि इट इज हाईली फ्लॉड, है ना. द ट्राइब्यूनल इज डिसीजन इज हाईली फ्लॉड डिसीजन, द कंट्रीज लीगल फ्रेमवर्क में इंटरवीन कर रहा है. ठीक है, तो ये सारे इश्यूज हम बोलने लगे, तो इन्वेस्टमेंट इंडिया में डिक्रीज होने लगी. द अवार्ड इम्प्रॉपरली रैटिफाइज कर्न स्कीम ऑफ डबल नॉन टैक्सेशन विच डिजाइन टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड. तो ये अपना जुगाड़ लगा रहे हैं, ठीक है, ये अपना जुगाड़ लगा रहे हैं, टैक्स अवॉइड कर रहे हैं. नाउ व्हाई इट इज इन न्यूज. अब इसके बाद क्या हुआ, इट वॉज कमिंग इन न्यूज बिकॉज रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिडैक्ट द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ. हमने डिसाइड किया कि इसको चेंज किया जाएंगे. Sir, how can a case against India be filed in USA? Because that company was, you can say, registered in New Jersey ना. जर्सी में कंपनी रजिस्टर्ड थी और उनको इंडिया से पैसा लेना था, तो जर्सी में कंपनी है तो वो जर्सी में, जर्सी इज इन यूएसए, तो वहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं. ठीक है, ओके. सो ठीक है, अब तो टॉपिक क्लियर हो गया. परफेक्ट परफेक्ट. सेंटर मूव्स टू रिडैक्ट मीन्स हटा देना, उसको चेंज करना. द गवर्नमेंट टुक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डूइंग अवे विद द कंटिशियस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ ऑफ 2012, जिसमें वोडाफोन और कर्न एनर्जी आर ब्लेम्ड फॉर विटिगेटिंग इंडियाज इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट. लेकिन रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन इंट्रोड्यूस्ड अ टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल in Lok Sabha to nullify the relevant retrospective
nullify the relevant retrospective tax clauses that was introduced in 2012 to bring the past indirect transfer of Indian assets under the ambit of taxation. तो इसकी वजह से ये भी न्यूज में आया है. As per the proposed change, any tax demand, this date आपको याद रखनी है, any tax demand transaction that took place before May 2012 shall be dropped and any tax already collected shall be repaid a bit without any interest. तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जो आपने टैक्स पे किया था वो आपको रिटर्न मिल जाएगा. To be eligible, the concerned taxpayers, maybe Vodafone or Kern, have to drop all the pending cases against the government and promise not to make any demands for damages or cost. तो हम क्या देंगे, जो आपने हमको टैक्स पे किया है, जब हमने टैक्स आपसे डिमांड किया था, हमने जो टैक्स पे किया है उतना हम आपको वापस कर देंगे, केस क्लोज करेंगे. नहीं आप कहीं जाओगे, नहीं हम कहीं जाएंगे. Finance Minister described 2012 legislation which is virtually being invalidated with the clarificatory amendment is both bad in law and bad for the investors. ठीक है, right? So it was अच्छा भी चीज है कि ये bad था ही law. This law was bad for investor and bad for the bad in law भी था ये. While the move held by the taxpayers and tax experts as a bold and pragmatic, the fact remains that NDA government has hitherto seen pursuing these tax cases aggressively. और अब ये about 81,000 करोड़ रुपए जो हमको वापस देने पड़ेंगे. 8100, not 81,000, 8100 करोड़ है, 8,100 करोड़ रुपए जो हमको रिफंड करना पड़ेगा. ठीक है, इन कंपनीज को जिन्होंने टैक्स पे किया था इसमें. Also it is being legislative sanctioned that no tax demand will be raised in future on the basis of 2012 retrospective amendment for any indirect transfer of Indian asset. Of course, the capital gain tax and the indirect transfer will continue to apply for transaction post 2012. तो मई 2012 के बाद अगर कुछ ऐसा ट्रांसफर हुआ है तो उसके ऊपर हम लगाएंगे, लेकिन मई 2012 के पहले नहीं लगाएंगे. ठीक है, ओके. देन नेक्स्ट इज न्यूज इन शॉर्ट. आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर है ना, काफी अच्छा समझ आ गया है. And you understood what exactly is this dispute and why this bill is coming in news, because there will be multiple articles, those will be coming, because international बेइज्जती वाला टॉपिक है ना, तो हो सकता है कि बहुत बार ये न्यूज़पेपर में आता रहे, and you will find these terms again and again, these cases again and again, and you will not be able to understand. Even if it comes in your examination, not in GK section but in any other section, then you will not be able to comprehend these passages. Generally what happens, because in your exam many, like majorly passages are coming only, so you have to comprehend that passage, and if you comprehend that passage, then it will be easy for you. And this type of passage, even if it comes in legal or in English, it will be difficult to comprehend. So you should have understanding of the topic that will help in comprehending the passage, whether it is in GK or in legal or in English. Okay, इसमें कुछ याद नहीं रखना है, बस कहानी याद रखनी है. थैंक यू. Okay, chalo then. Let's move on to news in short. World Tribal Day. World Tribal Day is observed on 9th of August, also known as International Day of World's Indigenous People. दुनिया के indigenous people का day है ये. 9th of August marks the day of the first meeting in 1982 of the United Nations Working Group of Indigenous Population. 1982 से ये है ना, इस 9th of August को मीटिंग हुआ था. The theme for this year was Leaving No One Behind, Indigenous People and the Call for New Social Contract. तो याद रखो, लिविंग नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे नहीं रखेंगे, सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे, है ना. देन YV Subba Reddy reappointed as TTD chief. Andhra Pradesh government reconstituted Tirumala Tirupati Devasthanam Trust Board. Tirumala Tirupati Devasthanam Trust Board and has appointed YV Subba Reddy as its chairman. Just नाम याद रखना है आपको, YV Subba Reddy इनके chairman अपॉइंट किया गया है. Then Bharat Dynamics to set up unit in Jhansi. Hyderabad-based Bharat Dynamics Limited (BDL), they decided to have ministry, and they are under Ministry of Defense. Decided to have their office, or you can say the Uttar Pradesh Express Industrial Development Authority have signed an agreement to set up a unit in Uttar Pradesh Defense Corridor. Uttar Pradesh Defense Corridor, the only defense public sector company in the country manufacturing missiles and underwater weapon for armed forces, would be setting up the unit on 215 acre land Jhansi, first in the North India. झांसी में होगा, पहला होगा नॉर्थ इंडिया में
भारत डायनामिक्स का। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड हाई कोर्ट्स डिसीजन ऑन ड्रीम 11। ड्रीम 11 बताइए सबको, है ना, तो सबकी टीम होती है, फैंटेसी टीम बनाई जाती है यहाँ पे क्रिकेट या फिर बाकी स्पोर्ट्स के लिए। Supreme Court dismissed an appeal against the Rajasthan High Court decision which held that online fantasy game Dream 11 involves skill and is not a gambling. The bench said, Rohini, है ना, इन सब ने बोला है, the issue was not res integrate or you can say unique and had been subject of several judgments. तो भैया आप खुद अब चेक कर लो, है ना, आपको क्या लगता है ये स्किल है या क्या है, मुझे तो नहीं पता ये क्या लगता है ना। तो एनीवेज आपका आपका अपना अपना कहना है इस पे। अडॉप्शन नॉट लिमिटेड बाय रिलीजन सेज दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट क्रिश्चियन कपल बोथ यूएस सिटीजन as adoptive parents to a minor girl born out of Hindu parents while reprimanding them for trying to adopt a child under a wrong law. The High Court reiterated the Christian and Muslim couple could not adopt Hindu child under a Hindu Adoption and Maintenance Act was sought to be done in this case. The court said child was being well taken care of by the foster parents and their family and hence there is no cause to remove the child from their charge and custody. And next is the High Court said the personal law of Hindus recognized adoption, therefore adoption ceremony known as, है ना, दत्त हमम, दत्तक लिए जाता है, दत्त हमम, where the biological parents voluntarily surrender hand over the child to the recipient following the religious ceremonies was considered sufficient to result or valid a legal adoption. The relationship of biological family to the child given in the adoption extinguished when this ceremony was conducted. However, this right to adopt had been brought under the HAMA. Next, HAMA was applicable only to Hindus and specifically provided that it applied to any other person who is not Muslim, Christian, Parsi, Jew by the religion. तो ये देख लेना एक बार, बिकॉज ये बड़ा इशू है, तो विल टेक अप दिस इशू अंडर दिस जुवेनाइल जस्टिस। जुवेनाइल जस्टिस के अंदर इस पूरे टॉपिक को लिया जाएगा। वन लाइनर में वैसे नहीं आना चाहिए था ये, कोई बात नहीं, जुवेनाइल जस्टिस में इसको करेंगे अपन। ITBP इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस कंडक्टेड फर्स्ट वुमेन ऑफिसर्स ऑन कॉम्बैट सर्विस। तो याद रखना फर्स्ट कुछ भी होता है तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर वन लाइनर एग्जामिनेशन। ITBP force which guards the line of actual control along India-China border commissioned first 2 women officers to combat after they completed their training. The name of the 2 women officer Prakriti and Diksha and their rank assistant commandant at entry level officer rank in the paramilitary. ITBP started recruiting women combat officer in the cadre in 2016 through all India examination conducted by UPSC. CAPF का एग्जामिनेशन होता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का एग्जामिनेशन होता है ये, ठीक है, उनको असिस्टेंट कमांडेंट का रैंक दिया जाता है। Then राइसी नेम्स मुखबर एज ईरान वाइस प्रेसिडेंट। तो ईरानियन क्राइसिस और ईरानियन इशू हमने किया था, है ना, राइसी का इशू है ये, राइसी जो नए ईरान के प्रेसिडेंट बने हैं। Iran's new president Ibrahim Raisi named a chairman of powerful state-owned foundation sanctioned by the US as his first vice president. Mohammad Mokhbar, long rumored by local media to be a top pick for the position, has for years headed the foundation known as Setad or the execution of Imam Khomeini's order. The reference to the Islamic Republic founder Ruhollah Khomeini, right? Ruhollah Khomeini, इनकी कहानी हम देख चुके हैं। Then 8 news, US women win basketball gold। तो पता ही है, US swept past Japan in the 7th straight women's basketball crown। तो याद रखना USA ने जीता है बास्केटबॉल। एंड बाकी तो आपको पता है, लाइक करते रहना है ना, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे आपको PDF मिलती रहेगी, इंस्टाग्राम पे यू विल गेट द रील। एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर, है ना। एंड इसके अलावा नीरज चोपड़ा की न्यूज थी वो आप सबको कल ही पता चल ही रहेगी, तो इसके अलावा कुछ है नहीं और खास। सौरभ सुरगफान भी आ गया, थैंक यू, ओके। चलो सर, when will get to the current affairs of July as we did of June? This will happen somewhere after 15th of this August, 15 अगस्त के बाद के वीक में होगा, ठीक है।
राइट, सट्टेबाजी, करेक्ट. कैपिटल गेन टैक्स स्पेसिफिकली, कैपिटल गेन इज सपोज, इसमें देखो क्या होता है, दो टाइप के होते हैं कैपिटल गेन टैक्स. वन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड सेकेंड इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ठीक है. सो सपोज यू हैव गॉट सम शेयर और सम एसेट. आपने कोई लैंड खरीदा है, ठीक है, लैंड खरीदा है, अभी आपने खरीदा 10 लाख रुपए में, ठीक है, 10 लाख रुपीज. अगर आपने विद इन 36 मंथ्स उसको बेच दिया, विद इन 36 मंथ्स आपने उसको बेच दिया, 10 लाख रुपए का आपने बेच दिया उसको 12 लाख रुपए में विद इन 36 मंथ्स, तो आपने 2 लाख रुपए का कैपिटल गेन किया है, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है. इसके ऊपर जो आपको टैक्स पे करना पड़ता है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स. शॉर्ट टर्म में आपने खरीद बेच की है. अगर आप उसको 10 साल तक रखते हो और 10 लाख की चीज फिर आपने बेची 1 करोड़ में 10 साल के बाद, 10 साल के बाद आपने 90 लाख रुपीस का इसमें प्रॉफिट किया है, इसके ऊपर जो आपको टैक्स पे करना पड़ता है उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स. सिंपल. कैपिटल गेन कितना आपका फायदा हुआ है उसके हिसाब से जो टैक्स पे करना होता है. थैंक यू अनुष्का, थैंक यू एवरीवन. Agreem, you are not required. Just read newspaper. No, do not make notes from the newspaper. Read newspaper for English और for legal. इन सब के लिए आप आपका न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो. ठीक है, चलो. Thank you everyone. See you in the next session tomorrow. Thank you. चलो, bye bye.